हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रीड वैल्यू विथ यूजर्स, या वी कैन से हाउ टू रीड वैल्यू विथ स्कैनर्स। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इन जावा, इफ यू वांट टू रीड एनी वैल्यू विथ डायनेमिकली, so you have so many way, but everyone prefer this way. If you are using a scanner, this is the better way. Okay, so how to get input from the users in Java, we are going to discuss about today in this video. So हमारे पास क्या है कि जावा स्कैनर क्लास है। ये हमें अलाउ करता है कि यूजर एक ऐसा वैल्यू जो ले सकता है थ्रू द कंसोल के थ्रू कोई भी वैल्यू ले सकता है। इट्स बिलोंग टू द जावा यूटिल डॉट पैकेज। कहाँ से बिलोंग करता है? जावा यूटिल डॉट पैकेज। ये जो पैकेज है जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर ये स्कैनर क्लास अवेलेबल है। इट इज यूज टू रीड द इनपुट फ्रॉम द प्रिमिटिव वैल्यू फॉर प्रिमिटिव वैल्यू। प्रिमिटिव वैल्यू यानी कि जो इंटीजर होगा, लॉन्ग होगा, फ्लोट होगा, बुलियन होगा, इस टाइप के वैल्यू को रीड करने के लिए। Like int, double, long, short, float and bytes. It is easiest way to read input in Java program. ये बहुत तरीका इजी है, सबसे इजी है। और इसका सिंटेक्स जो है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एक क्लास है, एस एक रिफरेंस है, न्यू एक कीवर्ड है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्कैनर का, और सिस्टम डॉट इन जो हमारे करंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसके पाथ को देता है, उसको बोलते हैं करंट सिस्टम डॉट इन। इनसाइड दिस, ओके, द अबव स्टेटमेंट्स क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कैनर्स। द अबव जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये क्या करेगा? स्कैनर क्लास हैविंग ए सिस्टम डॉट इन एज एन आर्गुमेंट, इट मीन्स इट इज गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑफ द प्रोग्राम। द जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज शुड बी import while using the scanner class। तो जब भी हम प्रोग्राम करेंगे कि जैसे डेटा को रीड करेंगे तो उसके लिए हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर को इंपोर्ट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, सो हम लोग इस सारे चीज़ों को एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कोड लिख करके हम लोग समझेंगे इजली कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग जैसे हम लोग इस थ्योरी को डिस्कस कर लिए, तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक क्लास, और उस क्लास में यूजर से वैल्यू को, डेटा को रीड करेंगे और उसे फिर से प्रिंट करेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे डायनेमिकली रन टाइम पे, अपने प्रोग्राम के रन टाइम पे। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें आगे और डीप में तो आप कह सकते हो इट ऑल्सो कन्वर्ट द बाइट्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम इनटू द कैरेक्टर्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स एज लाइक ए डिफॉल्ट कैर सेट। मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास। देखो, स्कैनर क्लास के पास कुछ मेथड हैं। जावा एंड स्कैनर क्लास प्रोवाइड्स द फ्लोइंग मेथड्स विच रीड द डिफरेंट प्रिमिटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक ही मेथड नहीं है कोई भी वैल्यू रीड करने के लिए, आपके पास अलग अलग मेथड है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको रीड करना है इंटीजर, तो आपके लिए एक मेथड है क्या? इंट नेक्स्ट इंट। इंटीजर जो रिटर्न करेगा, और नेक्स्ट एक मेथड है जो स्कैनर क्लास के अंदर है। तो इट इज यूज टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज एन इंटीजर। तो ये जो नेक्स्ट इंट है क्या करता है? इंटीजर टाइप को वैल्यू को रिसीव करता है या रीड करता है या इनपुट लेता है। फ्लोट क्या करता है? नेक्स्ट फ्लोट, ये फ्लोट टाइप के वैल्यू को लेता है। नेक्स्ट डबल टाइप के वैल्यू को लेता है। नेक्स्ट बाइट टाइप के लेता है। जैसे आप फ्लोट वैल्यू कोई दे रहा है, यूजर फ्लोट वैल्यू दे रहा है, और नेक्स्ट इंट से अगर आप रिसीव करोगे तो नहीं होगा आप नहीं डाल सकते नेक्स्ट इंट के थ्रू फ्लोट वैल्यू को, आपको एरर मिल जाएगा। बाइट टाइप के वैल्यू को बाइट से रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग बहुत सारे आपको पैराग्राफ हैं, तो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए। नेक्स्ट बुलियन टाइप की वैल्यू के लिए नेक्स्ट बुलियन। केवल लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग भी है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट भी है, नेक्स्ट बिग इंटीजर भी है, नेक्स्ट बिग डेसिमल भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड हैं स्कैनर के पास, जिससे आप किसी भी टाइप के वैल्यू को रीड कर सकते हो, उसे स्टोर कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं एक क्लास, और उस क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे रीड करते हैं डेटा को।
तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्लास से क्रिएट करता हूँ, क्लास टेस्ट स्कैनर। टेस्ट स्कैनर क्लास है, इसके अंदर एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक्स void main string args। okay, this is the method. Now what I have to do, I have to take data from users, so I have to create an object of the scanner. So because a scanner is not available by default in .java classes, okay, so you have to write a scanner sc equal to new scanner system dot in. Make sure capital system is a class, scanner is a class, new is a keyword for create a object of a scanner, and sc is a reference. Okay, if you are write like that, if you are not import any package, then you are getting error. So you have to import package where a scanner is available. So import java dot util dot scanner, that's it. Okay, one more things you have to print on the console, system dot out dot println enter your name. I'm saying in console enter your name. If you enter your name, so I have to receive this name like a string value. So string name equal to sc dot next. You have a next line also for store the string. I will differentiate it later. Now if he enter the name, I have to print one data system dot out dot println your name is dash name. Whatever you enter, you have to display. That's it. Just I'm going to copy this one. Okay, and I'm going to save. I'm going to save as .java. Okay, fine. You just go here, clear, nothing will happen. Okay, no problem. Okay, just write java c. I am right location right now. So java c your class name dot java. It is a tools to compile your program. Okay, fine. Java your class name. So it's saying enter your name and your cursor is blinking here. So it's expecting please enter something. So for examples, I'm going to enter Prince. Okay, and if I enter Prince and with Kumar, so it is going to say your name is Prince only. So it is the problem if you are using next. So you have to write next line. Okay, now your problem is solved. Just compile and run. Your name is, I'm going to enter Prince Kumar. Now it's saying your name is Prince Kumar. Is it right? Yeah, is it right? So when you want what? For examples, if I want to read as a characters, for examples, I want to read some data like characters. So just I'm going to copy this one. Okay. So here I'm going to commit read string type string value. Now I'm going to say here read character
not character, integer, INTE, integer value. So you have to write here like integer is enter any number, enter number, yeah, roll numbers, and it's a store in integer. So just write int. You have to change this method name because he want next int. Okay, next int for store the integer value, and your roll number is roll rolled. Okay, now is it fine? Yeah, it's fine. So you just go compile and run. It's saying enter your name, cursor is blinking, so just enter Prince Kumar. Again you press, again your cursor is blink, enter your roll numbers. So my roll number is 40. I have entered 40. Once I have entered, it's saying your roll number is 40. Okay, it's nice now. Yeah, so you learn how to read value from the users, how to read a string, how to read integer, how to read byte, everything is same. One more things, if you want to read, for example, if you want to read as a character, so it is a little bit complex, so you can do it. I'm going to remove this one. I hope you know it. Okay, so you just remove it, yeah, otherwise you can take also, no problem. So if you take so enter your gender, you have to say enter your gender, and you have to change here a string name to character, char, char is ch, yeah, you can say gender. Okay, enter your gender, it is going to read like next and dot char at of 0, then only it's read. Okay, now you can print here gender, and you can say your gender is, that's it. Just compile, what is going to happen? Yeah, compile successfully, just run it, run successfully. Enter your name, Prince Kumar, enter your roll number, anything 60, enter your gender, for example male, so it is going to print your gender is male. So I hope you know how to read value from the users, like string, like integer, like any characters, everything you can read through the users, and it is a very simple programming. If you want this code, I will post the code, this one, in your account, yeah, you can say in my website, so you can read it. Okay, I hope you got it. You just take a screenshot, yeah, you can take anything, okay, and you can write in your code. Okay, thank you so much for watching my video, and I hope you know how to read data from the users. Thank you.